नमस्कार आपको स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 OPSC चैनल रे आपण मैंने देखी पारे आज आउ गोटे नुआ सेसन नहीं कि मुझे एग्जाम मात्र रहा 6 दिन कहले चलो एवं ऑलरेडी आपंकर एडमिट कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट आसी जो मैंने डाउनलोड करना डाउनलोड करेंगे से सेशंस यानी पर्टिकुलरली जो सेंटर अच्छी आपंकर देखी ने एवं इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट को पढ़ी ने कारण जो नुआ पैटर्न आम चेंज होती अनुसार एग्जाम हो तेणु जमती किसी भूल न रहू मिस्टेक न रहू ये जिनस को एनश्योर करेंगे कारण आपण मैंने देखिथे ओपीएससी मेन्स रे गोटे रिजेक्शन लिस्ट भी आसी सिलेक्शन लिस्ट तो आसी सहित गोटे रिजेक्शन लिस्ट भी आसी से रिजेक्शन लिस्ट फॉर डिफरेंट रीजन्स दोज कैंडिडेट्स हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कमिशन राइट तेणु से भूल करेंगे ना कारण एत वर्षर परिश्रम एफर्ट वेस्ट जीव तेणु से मिस्टेक करेंगे ना ठीक अच्छे एगेन आज टॉपिक हूँ पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अच्छी एवं आज सेशन में मुझे एक्चुअली प्लान करिछि कि आपण माने ही आंसर करेंगे मु आपन को आंसर कहवाक जाऊनी आपण माने ही आंसर करेंगे कारण लास्ट 6 डेज जो अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रिविजन करवा एटा हूँ मेन काम तेणु जदि आज आंसर आप न करें तेज डेफिनेटली यू शुड इंट्रोस्पेक्ट कारण बहुत जन अच्छा आप देखिए आमर जो सेशंस गुड़िक हूँ देखिथे से मेन रोचे कि सर 1 लाइनर स्टेटमेंट आसुनी 2 लाइनर स्टेटमेंट आसूची 3 लाइनर मल्टीपल स्टेटमेंट ट्रू बट essence and theme of the question is important more than the statement based or single liner multiple statements. So essence कौन question the theme of the question is more important than the format of the question. तो से जिनस को आपन को बुझीबा को पड़िबो राइट इफ यू जदि आपनकर 1 लाइनर स्टेटमेंट जदि आपनकर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होची राइट एंड आउट जिनस मु कहि रखे आपन को ओपीएससी पूरा वर्ष सारा चिंता करिकी गोटे सेट 100 क्वेश्चन सेट बनाऊँगी एवं तार पूरा मेसिनरी ताको दिया जाइए स्टिल आपड़ देखिए कौ वर्ष गोटे दुटा क्वेश्चन भूल थी कौटे ऑप्शन थी भूल थी क्वेश्चन को ओमिट करा जाउची एंड हियर फैकल्टीज आर लाइक ऑलमोस्ट इन एवरी डे और एवरी अल्टरनेटिव डे से माने क्वेश्चन आपन सामने को नहीं आस सो यू कैन कंपेयर विथ दैट राइट तेणु जो मानकर स्लाइटली मु देखुली कमेंट सेक्शन रे कि सर कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बेस आसीबो स्टेटमेंट ये सब जिनस को ऑब्वियसली दैट फीडबैक वी आर टेकिंग एज पॉजिटिव आ से पे देखिबे आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अछि एवं सबटु बड़ा इंटरेस्टिंग जिनस होउची कि मु जेमति कहली क्वेश्चन रो आंसर आपन को करबा को पड़िबो कारण ई जो टॉपिक टी अछि टेक्निकल टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एटा एवं ये टॉपिक रो क्वेश्चन आसे तो सेत पे मु एक्सपेक्ट करिबी आंसर आपन को साइड रो आसीबो आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन राइट तेणु चलते स्टार्ट करवा आज सेशन एंड आज मोटिवेशनल कोट हूँ स्मॉल इज नॉट जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन स्मॉल इज ए टारगेट डेस्टिनेशन इटसेल्फ जोटा आप जानी यार मेन एसेंस हूँ कौन ना स्मॉल जमती सपोज आप देखिले गोटे दिन रे मते गोटे चैप्टर या 4टा पेज कंप्लीट करने समय लगिगला कारण आपको बुझिकी पढ़ुवे एनालाइज करके पढ़ुवे तो आपको स्लाइटली समय लगिला जोठी आप सांग मैंने पढ़ुचे अरे मुझे आज 2टा चैप्टर सारिदेली मुझे 3टा चैप्टर सारिदेली मुझे आज बही सारिदेली तो दिस काइंड ऑफ ये जो कंपैरिजन गोटे स्टार्ट हो जाए आपन मन में आप भाविए ना भाई मु बहुत बहुत पछरे अच्छी बट पॉइंट हूँ जदि आप स्मॉल यानी कि कम करूचंदी भल से करूचंदी then that is something a stepping stone and the small is great destination itself एवं से जो छोटो छोटो टार्गेट या छोटो छोटो जो अचीव करूचंदी सी भी गोटे गोटे डेस्टिनेशन से मु सब कहे गोटे जिनस टार्गेट ओरिएंटेड आप पढ़ंतु कारण जब आपनकर टार्गेट रहिबो नाही तो ऑब्वियसली आपन को यू विल इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम आपनकर डेस्टिनेशन काफी दूर ही जीव जमती जमती कहते ना पद्म घुंची घुंची जाउची तो एक्जाक्टली द सेम थिंग विल हैपन सो टार्गेट सबू दिन को टार्गेट करंतु डेली बेसिस रे टार्गेट फिक्स करंतु वीकली बेसिस रे करंतु एंड मंथली बेसिस रे मध्य ठीक अछि एनीवे तो से स्मॉल टार्गेट इटसेल्फ इज ए डेस्टिनेशन जदि छोटो छोटो टार्गेट को अचीव कले डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बड़ टार्गेट भी आपण अचीव करि परिबे इकोनॉमिक्स डिस्कस करियो फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड 1 आवर सो लेट्स बिगिन ठीक अछि स्टार्ट करिवा
द मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज व्हाट, यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। यदि कहार मन प्रश्न आसुथबो कि ये डिवैल्यूएशन रो माने कोन कहि देले कि खाली डिवैल्यूएशन लिखा है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, लेट मी फ्रेम इट इन अ बेटर मैनर। तो the major aim of devaluation of currency is to what, which of the following statement is correct? Encourage export, encourage import, encourage both exports and imports, discourage both exports and imports. Answer please. Answer आपन को ही करबा को पड़ियो, आंसर करिवे एटा को। गुड मॉर्निंग, प्लीज आंसर इट। देवी आराधना, ए वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज आंसर। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रो मूल लक्ष्य कोन? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रो मूल लक्ष्य कोन? दिस टॉपिक इज अबाउट द एक्सचेंज रेट। बी आंसर, संजना गुप्ता कहउछन बी आंसर, दैट मींस एनकरेज इंपोर्ट। एनी अदर आंसर? संजना आपण दउछन एग्जाम दउछन एथर प्रीलिम्स दउछन, दिस इज ए टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, दिस इज ए टेस्ट। जदि जो माने आज एग्जाम ए संडे रे दउछन, दिस इज ए काइंड ऑफ टेस्ट। प्लीज आंसर करिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज आंसर करिवे। यार आंसर कौन हबो? द मेन मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन, आंसर इज ए, संजना गुप्ता, ए आंसर। ओके, एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर अदर देन ए? नो इश्यू संजना, ए भी देखिबा। देवी आराधना, विशाल, सी। ओके फाइन, एनी अदर आंसर? देखो तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी माने कौन? सिंपली माने हो आपण देखिथिबे वर्तमान न्यूज रे चलीची, गोटे डॉलर हमर थिला केते 83 रुपीस थिला गोटे टाइम रे, गोटे टाइम माने जस्ट रिसेंट आपण पास देखिबे 83 रुपीस थिला, वर्तमान केते हे गला 84 रुपीस। तो यार इंपैक्ट कौन पड़ियो? जे देखिबे दस मोदी गवर्नमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, तो क्रिटिसाइज करा जाउची कि करेंसी वीक ही जाउची, दैट इज ट्रू, करेंसी अगेंस्ट डॉलर वीक होउची। बट आपण गोटे चिंता करंतु, गोटिए डॉलर देकी जे 83 रुपीस आपण को मिलुथला, ता माने गोटिए डॉलर देकी 83 रुपीस वैल्यू रो गोटे प्रोडक्ट आपण को मिलुथला, वर्तमान गोटिए डॉलर देकी आपण को 84 रुपीस रो प्रोडक्ट रो वैल्यू आपण को मिलिवो। ता माने गोटिए डॉलर देले आपण को अधिका पैसा मिलुची। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अधिका पैसा मिलता माने कोन? तो माने होची सपोज जो माने इंडिया रु इंपोर्ट करिबा पई चाहुचंदी, सेमानक पई इंडियन प्रोडक्ट्स सस्ता रहिबो। आउ टिके आपण को इजी कर दउची, गोटिए डॉलर रे आपण 60 टंकार प्रोडक्ट किनी पारुथले, डिवैल्यूएशन हला परे गोटिए डॉलर वर्तमान हे गला 70 टंका, राइट? सपोज गोटे प्रोडक्ट रो दाम थिला केते, प्रोडक्ट 8 रो दाम थिला 60 रुपीस, तो आपण 60 रुपीस रो प्रोडक्ट आगु किनु पड़ुथले गोटे डॉलर देकी, वर्तमान 60 रुपीस माने गोटे डॉलर देकी 60 रुपीस रो प्रोडक्ट किनिला पर भी 10 रुपीस बळका रहउची आपण पाखरे। दैट मींस फॉरेनर को पई जो माने इंडियन प्रोडक्ट्स किनिबे से माने इजीली इंपोर्ट करि परिबे, तांको पई इंपोर्ट सस्ता हे जिवो। ता माने कोन? इंडिया पई कोन हबो? इट विल एनकरेज एक्सपोर्ट, इट विल एनकरेज एक्सपोर्ट, एनकरेज एक्सपोर्ट। दिस वुड बी द आंसर, एनकरेज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़िबो आपनकर, राइट? एक्सपोर्ट बढ़िबो। डिवैल्यूएशन माने कोन? डिवैल्यूएशन माने होउची एक्जेक्टली ई जो जिनसडा म आपन कहउतली 60 रु 70 गोटिए डॉलर रो मूल्य इंडियन रुपी रे जदि अधिका रहउची तबे सेटा होउची डिवैल्यूएशन। दुईटी कांसेप्ट अछि आपण जानिथिबे, गोटे होउची डिवैल्यूएशन, आउट होउची डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। Devaluation and depreciation of currency both are correct, I mean both are the same concept। गोटिए डिफरेंस होउची जेतेबेले गवर्नमेंट डेलिबरेटली ताकू डोमेस्टिक करेंसी रो वैल्यू को कम करे, दैट इज नोन एज द डिवैल्यूएशन। जेतेबेले मार्केट फोर्सेस द्वारा करेंसी रो वैल्यू कम हुए या करेंसी डोमेस्टिक करेंसी सस्ता हुए, सेटा को हमें डेप्रिसिएशन बोली को ये कांसेप्ट को मन रखते हुए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉन्सेप्ट्स। तेणु डेप्रिसिएशन हो किंबा डिवैल्यूएशन हो, दुईटी जाक केस रे आपनकर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, इट विल एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विल बी कॉस्टलियर, एटा को मन रखते हुए, इंपोर्ट विल बी कॉस्टलियर एंड इट विल एनकरेज एक्सपोर्ट, एनकरेज एक्सपोर्ट, राइट? ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिबा।
आंसर करंतु फॉरेन करेंसी व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन एटा को ऑलरेडी बहुत थोड़ा हमें डिस्कस करिचे से आपनकर मैराथन सेशन हो इन डिफरेंट सेशन रे हमें डिस्कस करिचे कोंतु आंसर करंतु आंसर करंतु यस सिंपली आपण कहि परिबे डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू इज डिक्रीजिंग डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू इज डिक्रीजिंग ठीक अछि यार आंसर करंतु फॉरेन करेंसी व्हिच हैज ए टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन माने कोन क्विक माइग्रेशन होची जल्दी आपण को देश छाड़ी कि से आउट देश को पळेबो दैट इज द क्विक माइग्रेशन काहे कि हुए सपोज आपण को इकोनॉमी रे डॉलर हिसाब रे इन्वेस्टमेंट ओबियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को टाइप रे आसीबो डॉलर रे आसिला तो डॉलर रे आसला पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ताको लागला कि एठू विड्रॉ करबा इन्वेस्टमेंट कारण सेते प्रॉफिटेबिलिटी नाही प्रॉफिटेबल आउट को मार्केट रे अछि तेनु जनरली जो स्टॉक मार्केट हो जो स्टॉक मार्केट हो या एक्सचेंज मार्केट जो गुडी हमें कहूचे सेठी जो इन्वेस्टमेंट आसे ताको जोठी फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी देखा जीवो से सेठी के माइग्रेट करिवार चांसेस थाए तो सेति पे देखिबे फॉरेन करेंसी व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन आंसर कहीं करूना कहीं करूना क्विक माइग्रेशन दैट इज नोन एज द हॉट मनी या हॉट करेंसी ऑलरेडी हमें डिस्कस करिचे एटा को हॉट करेंसी क्विक माइग्रेशन जनरली एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जोटा कहूचे दैट इज हैविंग ए टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन एफडीआई इज ए काइंड ऑफ परमानेंट हमें डिस्कस करिचे मन थिबो एफडीआई वर्सेस एफआईआई FDI versus FDI foreign direct investment which is more or less stable in nature than the FII foreign institutional investment ठीक अछि foreign institutional investment is having a tendency of what quick migration सेति पई हमें ताकू डिस्कस करितले ठीक अछि बुझियाला कांसेप्ट देखो ये क्वेश्चन आसीबार बहुत चांसेस एगुडी को अछि कारण बर्तन जेतु न्यूज रे काफी अछि विगत किछि मास हलानी करेंसी काफी वीक होउची एवं मोदी सरकार को क्रिटिसाइज भी मध्य करा जाउची तेनु चांसेस अछि क्वेश्चन आसीबार आंसर करंतु यार कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस व्हिच द गवर्नमेंट कैन टेक devaluing the domestic currency consider the following actions which the government can take devaluing the domestic currency को devalue करिवार चांसेस अछि या consider the following action the government can take government कोन action या steps नबो which of the above action or actions can help in reducing the current account deficit या CAD जोटा अछि से current account deficit को reduce करिवो CAD या current account deficit माने कोन current account रे your import is higher than the export you are importing more goods and services than the export so please answer which of the following steps would be taken by the government to rectify the problem of current account deficit answer करंतु faster एते समय मिलिबनी आपन को 120 मिनिट रो एग्जाम 100 टी क्वेश्चन अछि यदि एते समय भाबिबार नेबे केमति हो आंसर करंतु देखंतु फर्स्ट स्टेटमेंट कोची devaluing the domestic currency of course devaluation हेले कोन होबो आपनकर एक्सपोर्ट कोन होबो बढ़िबो एक्सपोर्ट जतबेले बढ़िबो you will earn more of foreign currency more of foreign exchange right तेनु more foreign exchange earning माने आपनकर एक्सपोर्ट इंक्रीज होउची इंपोर्ट कम होउची एवं जो foreign currency आपण earn करिवे you can use those foreign currency to finance your import bill तेनु सेति पई एक्सपोर्ट बढ़िबाटा निहाती आवश्यक जतबेले करंट अकाउंट डेफिसिट रहउची राइट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड देखंतु रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी एठी प्रथम स्टेटमेंट रे कोन डिस्कस हमें करूथलु कि डिवैल्यूएशन फल रे एक्सपोर्ट इंक्रीज हबो राइट बट सेकंड स्टेटमेंट देखंतु ताकू इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग इन नेचर सेकंड स्टेटमेंट रे कहूची एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम करिवा भाई एक्सपोर्ट सब्सिडी कम कले कोन हो एक्सपोर्ट कमिवो माने कोन हो योर अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल गो डाउन दैट इज अनदर प्रॉब्लम जोथि पई कि आपनकर जो करंट अकाउंट डेफिसिट प्रॉब्लम टे अछि ताकू रेक्टिफाई करि परिबे नै थर्ड स्टेटमेंट देखंतु adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from the FII FDI and FII द्वारा अपन को कंट्री रू फॉरेन करेंसी आसीबो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू रे फॉरेन करेंसीज आसीबो and you can use those foreign currencies to again refinance the import bill so obviously third statement is also correct answer is what answer is D 1 and 3
आंसर इज डी 1 and 3 जो माने सी बी ए कहउचंदी सेवन का पई डी होची आंसर 1 and 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो माने देखुचंदी प्लीज शेयर इट विथ अदर पीपल आल्सो। आपण माने देखिथिबे जो पहर दिन रिजल्ट थिला maximum students they have given credit to the YouTube, not I mean apart from parents and teachers and family and relatives, they have given credit to YouTube and the new channels are highlighting that YouTube ru पढ़ी की OSL है। तो please share it with the other students, that will create a magic। please share it, share करंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आंसर व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट एफडीआई एफआईए विषय बहुत थोड़ा में डिस्कस करिछु। प्लीज आंसर बाइंग ए कंपनी इन द टारगेटेड कंट्री या टारगेट कंट्री, expanding operations of an existing business in that country, investing in the shares and stock companies in the capital market। please answer, easy question, the easiest one, please answer the easiest question, please answer कौन हबो? yes D both A and B। ये C होची कौन? FII बेसी आउ डिस्कस मु करिबिनी। FII होची C। A buying a company in the target country, जेमती आपण देखिथिबे स्टारबक्स, जदि देखिथिबे गूगल खरी देखि परिबे, मु जाननी आपण देखथिबे नै। स्टारबक्स गोटे जो कॉफी हाउस अछि सेट लिखा हिथिबो टाटा अलायंस। तो टाटा होची इंडियन कंपनी, स्टारबक्स यूरोपियन कंपनी, दे हैव मर्ज्ड देमसेल्फ या जॉइंटली दे हैव इन्वेस्टेड इन द कॉफी। सो से होची कोन ना जॉइंटली इन्वेस्ट करूचन गोटे कंपनी रे। बाइंग भी कंपनी जदि करूचंदी, कंप्लीटली परचेजिंग ए कंपनी, जेमती सपोज रेंज रोवर आ आपनकर जैगुआर को टाटा परचेज करथिला, राइट। से होची गोटे काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड होची एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो ऑब्वियसली फर्दर एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस जदि आपण करूचंदी सेटा भी काइंड ऑफ ए फॉरेन या डिफरेंट कंट्री रे, जोटा डोमेस्टिक रे नो डिफरेंट, माने इंडियन बाहर करूथबो, बाहर लोक इंडिया रे करूथबो। And the third is of course FII. So answer is what? D, both A and B. Next question. When two or more countries enter into an agreement to eliminate import quota and tariff and promote trade among themselves, such a group of countries are said to form what? Please answer. When two or more countries, दुईरु अधिक देश, enter into an agreement to eliminate import quota and tariff, eliminate import quota and tariff, please answer कौन होगा? D, among themselves such a group of countries are said to form a what? आंसर करिए बेटा को। फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, ए कॉमन मार्केट, बोथ बी एंड सी। नहीं ठीक अच्छे देखिए देखो तो फ्री ट्रेड एरिया माने कौन? फ्री ट्रेड एरिया माने होची जेतबेले टू और मोर कंट्रीज दे reduced the tariff, they reduce the restriction or reduce the tariff in some countries, some goods, and eliminate tariff in other goods, let's say। किछि जिनस रे जो ट्रेड से माने करूचंदी, किछि जिनस रे से माने कोन करूचंदी, टैरिफ को कम करूचंदी। इन सम गुड्स दे हैव रिड्यूस्ड द टैरिफ, नॉट एलिमिनेटेड। सम गुड्स देखो तो कंप्लीट एलिमिनेशन हुए नहीं, सम गुड्स दे हैव रिड्यूस्ड द टैरिफ एंड इन सम गुड्स दे हैव एलिमिनेटेड इट, राइट। से केस रे हमें ताको फ्री ट्रेड बोली कहबा। कस्टम यूनियन माने कोन? कस्टम यूनियन माने कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, राइट। तेणु कस्टम यूनियन होची जेंति ग्रुप हो, जेंति यूरोपियन मार्केट आपण कहि परबे। यूरोपियन मार्केट सेठी जो कंट्रीज गुडी को अछंदी मेंबर कंट्री, दे हैव सिंपली एलिमिनेटेड द टैरिफ एंड कोटा। सेवन को भीतर कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नाही से कंट्रीज गुडी को भीतर, राइट। कस्टम यूनियन। थर्ड होची
ए कॉमन मार्केट कहले हमें कौन बुझू ना अपार्ट फ्रॉम दिस कंप्लीट एलिमिनेशन से माने कौन करंती नो रेस्ट्रिक्शन इन व्हाट कैपिटल एंड लेबर मार्केट or labor movement you can say no restriction in capital and labor that means ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ labor migrate କରୁଛି ଗୋଟେ country ଆଉ ଗୋଟେ country को सेठी कौन रेस्ट्रिक्शन नहीं जो वीजा रेस्ट्रिक्शन ये रेस्ट्रिक्शन ये सब ना आपण यूरोप रे एंट्री करेंगे यू कैन लाइक गोटे वीजा रे ही सब कंट्री बुलिक आस परिबे एंड द अदर वन इज द कैपिटल दैट मींस एफडीआई रे या एफआईआई रे कौन से प्रकार रेस्ट्रिक्शंस नहीं कोडियाटा कॉमन मार्केट रे तो फ्री ट्रेड एरिया देखि मन रखता कंप्लीट एलिमिनेशन हुए इन सम गुड्स जो गुड्स रे से माने एग्रीमेंट करिवे जो गुड्स रे से माने चाहिबे से केस रे से माने टैरिफ को रिड्यूस करिवे नंबर 1 नंबर 2 अदर गुड्स रे एलिमिनेट करिवे टैरिफ कस्टम यूनियन माने कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ देयर इज नो सच बैरियर टैरिफ और कोटा एंड थर्ड इज ऑब्वियसली द कॉमन मार्केट जोटे की अलोंग विद दिस कस्टम यूनियन तो थिबो प्लस कैपिटल एंड लेबर मूवमेंट रे कौन से रेस्ट्रिक्शंस नथिबो सेटा हिजबो कॉमन मार्केट ठीक अछि तो ये कौन कहूची टू एलिमिनेट इंपोर्ट कोटा एंड टैरिफ एंड प्रमोट ट्रेड अमंग देमसेल्फ तमने सी कहूची कंप्लीट एलिमिनेशन हेतिबो तो ऑब्वियसली दैट इज कस्टम यूनियन कंप्लीट एलिमिनेशन माने कस्टम यूनियन राइट जदि हाफ थांता तबे हमें फ्री ट्रेड कहि परथान नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर करिवे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा आंसर करंतु So, which of the following is a bond through which Indian entities can raise money from foreign markets in rupees and not in foreign currency? Simply से पचड़ची कौन जो इंडियन कंपनी माने अच्छे इंडियन एंटिटीज या इंडियन कंपनी इज ए बॉन्ड थ्रू which Indian entities can raise money from foreign market in rupees. Indian rupee रे से माने money raise करी परिवे foreign market रू Indian company माने तो obviously please answer. Corporate bond अच्छी, मसाला bond अच्छी, municipal bond अच्छी, zero coupon bond अच्छी. Answer करिवे. Correct. मसाला bond. Spices. मसाला बॉन्ड होची सिंपली मन रखता हूं इंडियन कंपनी माननकु बाहर मार्केट रे या फॉरेन मार्केट रे जेतेबेले बॉन्ड माध्यम रे फंड रेज करिवा पई समाने यूज करि पारंती मसाला बॉन्ड को राइट एवं को माध्यम रे इंडियन रुपी नॉट इन फॉरेन करेंसी रादर इन इंडियन रुपी ये स्टेटमेंट भी बेले बेले पछरे इंडियन रुपी रे से माने कोन करिवे रेज करि परिवे मनी राइट सो दिस इज नोन एज मसाला बॉन्ड आंसर करिवे आपण जे मसाला बॉन्ड ता कहा द्वारा डेवलप करा जायथला व्हिच ऑफ द इंस्टीट्यूट और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज डेवलप्ड दिस मसाला बॉन्ड ये होची आपण पई क्वेश्चन प्लीज आंसर करिवे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज abolition of import licensing free flow of foreign direct investment disinvestment of public sector equity answer please संजना बिल्कुल करेक्ट IFC देवी आराधना नो प्रॉब्लम आपण वीडियो गुडा को फॉलो करंतु आपनकर कांसेप्ट क्लियर हे जिवो ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लीज आंसर देखो से को ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली माने कोन ग्लोबलाइजेशन होची इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी इंटीग्रेशन ग्लोबल वर्तमान को जाउछ ना वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज द करेंट वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज तो विलेज काई को जाउछ द सो मच ऑफ से जो आगुर जो गैप थिला से गैप हैज बीन नैरोड डाउन वर्तमान इंटीग्रेट करा जाइछि पूरा लाइक इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी जो इंटीग्रेशन होची माने कोन कौनसी प्रकार बैरियर रेस्ट्रिक्शन रहिबो नाही इंटीग्रेशन माने कोन कौनसी प्रकार रो बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस रहिबो नाही तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज
right? Reduction in import duty se kuch does not include. Reduction in import duty mane kon? Obviously part of the globalization. Abolition of import licensing ଆପଣ ଏଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍. ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି. ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଇକ୍ୱିଟି, ୟାର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ. ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ୟାକୁ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ କହିପାରିବେ, କାରଣ ଏଠି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ग्लोबल लेवल कथा कहउछन या डिफरेंट कंट्रीज विषय कहउछन, नॉट इन द एक्सटर्नल सेक्टर रे कहउछन. आपण डोमेस्टिक इकोनॉमी विषय डिस्कस करूना. ये पॉइंट कोन डोमेस्टिक इकोनॉमी विषय कहउछे, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, राइट? सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग authority sanctions foreign exchange for import of goods? Please answer. जो import आमर होउची, जो आम कंट्री जो import करूची बाहरु, से import पाई किए actually foreign currency या foreign exchange sanction करूची या allocate करूची या provide करूची? Please answer. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंडिया रे मेंटेन किए करे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंडिया रे मेंटेन किए करे? आंसर को प्रथम करिवे. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंडिया रे मेंटेन किए करे? करेक्ट, आरबीआई. मन रखते बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करे आरबीआई. इंपोर्ट पाई फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज को भी अलोकेट करिबो आरबीआई. Right? Reserve Bank of India, RBI. Next, who maintains the foreign exchange reserve in India? Next question, easy question, just more discuss के लिए अपन को सही तो Reserve Bank of India, right? Bharatiya Reserve Bank. Next, which among the following is are true for real effective exchange rate of the currency of a country? Answer करिवे. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट माने कौन? गोटे अच्छी आप जानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. गोटे अच्छी आप जानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, आउट अच्छी कौन ना रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. ठीक अच्छे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ताहले आंसर कौन हम? देखो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कौन से कहूँ? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज वेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ रेट ट्रेडेड करेंसीज, इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन रेट प्राइसेस. प्रथम आपको नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बुझाऊँ, तापर रियल को आसबि, कारण दुईटी हूँ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट. रियल भी पचारि पारे, नॉमिनल भी पचारि पारे. करेक्ट? देखो नॉमिनल हूँ सिंपली आप देखिए सब आम कौन कहूँ ना इंडियन करेंसी इज डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, स्पेसिफिकली डॉलर विषय में कहूँ कि डॉलर अगेंस्ट इंडियन करेंसी काफी डेप्रिसिएट करुच्ची. तो होता ही पारे कि विथ रेस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, लेट्स से यूरो, लेट्स से जापानीज येन, लेट्स से पाउंड स्टर्लिंग, ये जो करेंसीज गुड़िक अच्छी द अदर इंटरनेशनल करेंसीज अपार्ट फ्रॉम दिस डॉलर ता अगेंस्ट ही थे पारे इंडियन करेंसी अप्रिशिएट भी करू थे पारे, राइट? अप्रिशिएट भी करू थे पारे. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी with respect to what or with respect to which currency India is depreciating, Indian currency is depreciating in fact, or with respect to which currency Indian currency is appreciating. हमको हेटा देखिबा को पड़िबो. But if you see India केवल डॉलर रे जे ट्रेड करे सेमति नुहे, ऑल्दो डॉलर रो ट्रेड मात्रा यानी कि ट्रेड परसेंटेज अधिका, बट इंडिया अलगा जो करेंसीज गुडी को अछि सेथि भी मध्य ट्रेड करे.
जापानीज येन रे करे या पाउंड रे भी करे या आपण कहबे यूरो रे भी करे ये सब रे भी हुए तेणु से नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कौन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिंपली आपण जानवा को चेष्टा करेंगे कि पर्टिकुलरली को करेन्सी या जो करेन्सी बास्केट अच्छे आमर पर्टिकुलरली को करेन्सी बास्केट अच्छी या जो जो करेन्सी रे इंडिया ट्रेड करुच्ची तार एगेन्स्ट रे कौन एक्सचेंज रेट रहिबो सिंपल जिनस मु आपन कहूची बेसी टेक्निकलिटीज को जीवानी ता एगेन्स्ट रे आमर कौन रहिबो एक्सचेंज रेट तो सेटा को केमती कैलकुलेट करा जाए सिंपली कौन ना जेमती सपोज पाउंड रहिला डॉलर रहिला जापानीज येन रहिला यूरो लेट से रहिला तो ये जो चारटा करेन्सी अच्छी ये करेन्सी एगेन्स्ट रे इंडिया ट्रेड करुच्ची बट देखिए जदि डॉलर रे सबुठु अधिका ट्रेड करुचे ता माने डॉलर को हमें वेट अधिका देवा स्टैटिस्टिक्स रे आपण वेट जानिथि वेट रो कांसेप्ट सपोज सेकेंड जोटा कि अधिका ट्रेड करुचे इंडिया सेटा लेट से पाउंड ताकू एटा सपोज आपण चारटा अछि तो 4 वेटेज आकु दउचन एटा को थर्ड रैंक रखिले एटा को सेकेंड लेट से रखिले एटा को फर्स्ट तो ए टाइप रो वेट देबे वेट देला परे तार मीन जो बाहर करिवे मीन एवरेज जोटा बाहरिबो सेटा हिजबो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एवं सेही वेटेड एवरेज को यूज करिकी आपण जेतेबेले ताकू इन्फ्लेशन सहित एडजस्ट करबा पई चेष्टा करिवे ओबियसली सेटा हिजबो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिंपल जिनस मन रखिबे बेसी कॉम्प्लिकेटेड दरकार नहीं तो जेतेबेले रियल इफेक्टिव हमें कहूचु इट इज वेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ रेट ट्रेडेड करेंसीज प्लस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन ये दुईटी जिनस बोथ ए एंड बी से कह जाउछि जदि खाली नॉमिनल हेइतांदा तबे ये जिनसटा नॉमिनल हेइतांदा नॉमिनल प्लस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन दैट इज द रियल वन चाइनीज युआन भी आपण सेटा एसडीआर रे जोटा आपण कहउचंदी सेतरे फिफ्थ करेंसी भी अछि से जिनसे भी डिस्कस करबा तो ठीक अछि तो सपोज मु एग्जांपल नउछि कि चारिटी करेंसी रे हमें ट्रेड करूचे तो सेत पई एज पर द परसेंटेज ऑफ ट्रेड वी आर अलोकेटिंग द वेट वी आर गिविंग द वेट करेक्ट से वेटेड जो एवरेज बाहर करूचंदी से एक्सचेंज रेट हिजबो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आकु जतबे इन्फ्लेशन सहित एडजस्ट करिवे सेटा हिजबो एडजस्टेड इन्फ्लेशन सेटा हिजबो इन्फ्लेशन रेट ऑफ प्राइसेस एडजस्टेड जोटा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोली कहबा ठीक अछि एतिकी जिनस मन रखथिबे रीर और नीर भितरे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन In the context of Indian economy, which of the following options correctly describe the composition of foreign exchange resources? या foreign exchange reserve consist of what? Answer करंतु एटा easy question. Foreign exchange reserve जोटा कि maintain करूची किए RBI consist of what? Foreign exchange reserve consist of what? Please answer. Easy question. ये क्वेश्चन जदि आंसर करिबा तो कोडा करिबा ताले देखो तो जो माने भी प्रीलिम्स दउचंदी मु गोटे जिनसे कहि रखे इजी क्वेश्चन जो गुडी को अछि जोटा कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स करिवे से क्वेश्चन रे केबे भी भूल करिवे नाही जदि से क्वेश्चन रे भूल करूचंदी कारण समस्त करि के आसीबे आपण जदि भूल करले तो सेडी आपनकर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट ही जो तो इजी क्वेश्चन को आपण फर्स्ट करिवे समस्त जोटा करछन सेटा डेफिनेटली करिवे किछि डिफिकल्ट थिबो ताकू यू कैन सिंपली स्किप दैट कारण से डिफिकल्ट लेवल 15 रु 20 भितरे ही थाई पारे जोटा कि बहुत ही कम परसेंटेज लोक करिवे कम परसेंटेज स्टूडेंट करिवे आंसर कोन हो डी संजना स्लाइटली आउट के थॉरली पढंदु in the context of Indian economy which of the options correctly describe the composition of foreign exchange resources तो इंडिया रो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहले हमें बुझु कोन फर्स्ट फॉरेन करेंसीज एसेट नंबर 1 प्लस गोल्ड नंबर 2 प्लस एसडीआर नंबर 3 प्लस रिजर्व पोजीशन एटा को मन रखते भूलिबे नाही टिल योर सिलेक्शन राइट फॉरेन करेंसी एसेट प्लस गोल्ड प्लस एसडीआर
plus reserve position. ये SDR and reserve position both are with the IMF. Both are with the IMF. तो मन रखता हूँ एटा देखो फर्स्ट देची फॉरेन करेंसी ठीक अच्छी बट लोन नुहे इजिली एटा को आपण एलिमिनेट करि परिबे फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई एफडीआई ऑब्वियसली नुहे एसडीआर गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑलमोस्ट ठीक अच्छी देखिबा रेमिटांसेस ऑफ एनआरआई एक्सपोर्ट अर्निंग्स इन ए ईयर लोन्स फ्रॉम द आईएमएफ दिस इज नॉट करेक्ट सी आंसर अच्छी बट स्टिल C is the most appropriate one, but C is again incomplete. इठी आउ गोटे रिजर्व पोजिशन आड होता ठीक अच्छे स्टिल मु आपन को जिनसे कहबी देखो तो फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी एसेट जो अच्छी से को फॉरेन करेंसी को आम रखुचे जमती मु चार्टा फॉरेन करेंसी कहूली आपन को डॉलर यूरो येन आउट होची आपनकर पाउंड स्टर्लिंग जोटा आम कहूचे ये चारोटी करेंसी को आम रखुचे कौथरे फॉरेन करेंसी हिसाब रे नंबर वन गोल्ड ओबियसली आम रखुचे गोल्ड सहित एसडीआर भी अच्छी एसडीआर हूँ सिंपली कौन मन रखता एसडीआर गोटे कन्वेंशनल मनी नुहे जमती कन्वेंशनल मनी हूँ जमती कॉइन नोट्स आम यूज करूचे सांगे सांगे पे कले आमको किसी गोटे जिनस किए दे दूची हाईएस्ट लिक्विड अमाउंट या लिक्विडिटी जोटा आम कहूचे से टाइप रो एसडीआर नुहे एसडीआर को पेपर गोल्ड बोली कहा जाए ये टर्म को मन रखते बेले बेले प्रश्न पचारे एसडीआर को पेपर गोल्ड बोली भी कहा जाए पेपर गोल्ड कौन पे कहा जाए कारण एसडीआर इटसेल्फ इज नॉट ए मनी बट इट्स एसडीआर विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ और टू परचेज सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज को बड़ी भाव में ना एसडीआर हूँ गोटे वॉलेट हूँ जमती आम पर्स या लिफाफ को आम कहू ना वॉलेट जमती पेटीएम वॉलेट रे आपण कौन करती पैसा रखती राइट से टाइप रो एसडीआर हूँ गोटे वॉलेट जोटा कि आईएमएफ पाखे आम रखू या इंडिया या आरबीआई या माने जिते आपनकर सेंट्रल बैंक अच्छी से माने कहा पाखे रखती से माने आईएमएफ पाखे रखती वॉलेट एंड दिस वॉलेट कंसिस्ट ऑफ फ्यू फॉरेन करेंसीज को फॉरेन करेंसीज ई चारोटी फॉरेन करेंसी जहाँ अच्छी ये भी थी प्लस जो जापानीज रे युआन जोटा अच्छी या रेनमी भी जोटा आम कहूचे सेटा भी इंक्लूड ही थाए सॉरी चाइनार युआन जोटा आम कहूचे या रेनमी भी जोटा कहूचे सेटा इंक्लूड ही थाए एटा मन रखता कि आरबीआई पाखे जो फॉरेन करेंसीज अच्छी से फॉरेन करेंसी रे ये चारटा करेंसी अच्छी बट जिते एसडीआर आपन देखिए ये चारिटा प्लस ये हूँ आपनकर जोटा युआन जोटा अच्छी चाइनीज करेंसी नाउ तो जिते क्राइसिस लाइक कंडीशंस आसे जिते जमती देखिए श्रीलंका रे क्राइसिस होता बांग्लादेश रे होता पाकिस्तान रे होता तो पर्टिकुलरली इंडिया रे जो 1991 रे भी होता तो से माने कौन करि परिवे आफ्टर एग्जॉशन ऑफ दिस ऑप्शन लेट्स से सेमाने पाखरे जहाँ भी नॉर्मल फॉरेन करेंसी थिला से सरी गला लेट्स से गोल्ड भी सरी गला नेक्स्ट अल्टरनेटिव कोटा आईएमएफ टू लोन से लोन रे फर्स्ट आपण एसडीआर को भी यूज करि परिवे देन यू हैव टू आस्क आईएमएफ कि जो एसडीआर आमे रखिचु से एसडीआर रे जो फॉरेन करेंसीज गुड़िक अच्छी से फॉरेन करेंसीज को लेकिन आम यूज करिपारिबो कि ऑब्वियसली आईएमएफ विल सैंक्शन यू और विल गिव यू परमिशन विथ सर्टेन कंडीशंस से कंडीशंस जहाँ आप जानिथिबे तेणु सी हूँ आपनकर एसडीआर फोर्थ जिनसटा हूँ रिजर्व पोजिशन हूँ जमती जोटा रिजर्व ट्रांचे बोली भी कहा जाए ताको रिजर्व पोजिशन भी से गोटे टाइप रो विंडो या गोटे टाइप रो ऑप्शन आईएमएफ थ्रू आपण लोन नहीं पारिबे आपण माने जानिथिबे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हूँ कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो आई थिंक लास्ट जो सेशन रे मु डिस्कस करूथली कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन मेंबर कंट्रीज माने जति की फंड करंदी सही फंड रो ही कोटा अलोकेट हेता है राइट तेणु 25% से कोटा रो माने सपोज गोटे कंट्री लक्षे टंका देला तार 25% हूँ 25,000 25,000 दैट 25,000 कैन बी केप्ट एज द व्हाट वी कॉल द रिजर्व पोजिशन और रिजर्व ट्रांचे पोजिशन बोली कहा जाए राइट तेणु ये हूँ कॉन्सेप्ट तेणु मन रखिए रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हूँ कौन ना एसडीआर गोल्ड होल्डिंग फॉरेन करेंसी एसेट्स प्लस आपनकर एटा रिजर्व पोजिशन विद द आईएमएफ नेक्स्ट आंसर करंतु एटा consider the following statements India has attained self-sufficiency in almost all consumer goods
In terms of capital goods, India still depends on import. Answer करंतु एटा. Answer करिवे. Easy question एटा. काफी easy question. Cash reserve ratio. B. Okay. देखो ये almost all consumer goods देइछ, right? India जदि आपण देखिबे particularly is self sufficient in terms of food grains or food items. India is self sufficient in terms of food grains or food items. It's not that India is self sufficient in almost all consumer goods. Number one. Number two जोटा अछि in terms of capital goods आपण देखुछन्ती. Obviously capital goods हमने एबे भी import करछ. आपण the latest economic survey देखिबे capital goods हमें import करूछु, chemicals हमें import करूछु, engineering goods हमें import करूछु, right? Food grains या food जो articles गुडिक अछि generally से गुडिक हमें self sufficient ही सारिछु. Second यानी 2 only is the correct. Next, please answer करिए. Easy question, again easy question. It's very difficult to like teach inside a studio when AC is not working due to power cut and all. So it needs lot of energy. Answer करंतु. Nobody. Game over. LR double. Okay, B answer कहउछनी. Which of the following does not से कहउछि? Does not form part of the current account. Export and import of goods, export and import of services, income receipt and payment, capital receipt payment. कोटा आंसर हबो D. D होछि आपनकर आंसर. मु आपन कहि दोछि. बैलेंस ऑफ पेमेंट जदि आपन देखिबे दुईटी अकाउंट अछि. ये सब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी सब ये. जदि एनसीईआरटी आपन पढिथिबे भलसे डेफिनेटली आपन आंसर करि परिबे एटाको. बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन कहूँ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन होची कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. नंबर वन. नंबर टू करंट अकाउंट रे कौन कौन था? फर्स्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सेकंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. एंड द थर्ड वन इज द रेमिटेंसेस और व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट, रेमिटेंसेस, गिफ्ट, ये सब था. कैपिटल अकाउंट रे कौन था? इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफआईआई. सेकंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. थर्ड लोन और बोरोइंग फ्रॉम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जोड़ा में कहूचे. सो दिस इज व्हाट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल अबाउट. एटी कौन पचारुची? नॉट export and import of goods, obviously current account part. Export and imports of services, obviously current account part. Income receipt and payment, obviously transfer payment rate include होची. Capital receipt and payment ये का हर part is altogether separate like current account रो अलग पूरा. तो से पे आंसर होची कौन? Not से पचारुची. D is the correct answer. ये समय रे भूल करंतु नहीं. काफी डिसअपॉइंटिंग लगुची मते. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स व्हाट? प्लीज आंसर. बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स व्हाट? विजिबल ट्रेड. विजिबल कोटा को कहू मर्केंडाइज या जोटा का हमें कहूचे गुड्स, दीज आर विजिबल. सर्विसेस इनविजिबल. सर्विसेस इनविजिबल. मर्केंडाइज गुड्स. तेणु विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड प्लस डेफ्ट. डेफ्ट माने बोरोइंग जो गुडा का हमें कहूचे. तेणु आंसर होची ऑल द अबव.
आंसर होउची all the above. Next, which of the following can be termed as the components of balance of payment? पुन थरे components of balance of payment, please answer. Components of balance of payment, please answer. Yes, invisible is services because you cannot see the service, you cannot feel it. जेमती आपण वर्तमान मु पढ़ौची या डिस्कस करूची सेशंस नौची आपण मते देखुचंदी ओडिसा रा को डिफरेंट कॉर्नर रु या इंडिया रा यदि कोडी आपण के जॉब करूथबे कोड कॉर्नर रे बसी आपण देखुथबे. सो यू कैन ओनली फील हां ओडे कोन चलची सेशन, राइट? सो सर्विसेस यू कांट सी, tangible नुहे, जोटा tangible हमें कहू ना, suppose this remote is tangible, you can see this. So this is a goods. Services, doctor जो treatment करूचे, आपण doctor को देखु चंदी, but doctor को दे treatment कौन कला आपण ठीक है ये गले. Lawyer आपण को advice कला, service, तो service is invisible. Economics तो difficult ठीक है. सेट पे ना मुझे आपण को starting रो जी कही ची कि session काफी interesting होगा, एवं ये चैप्टर स्पेसिफिकली डिफिकल्ट जदि आपण आंसर न करि परिबे. ठीक अछि, कोन आंसर हबो कोंदु? सी. ओके फाइन. 1 and 2 करेक्ट. 1 and 2 करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. एरर्स एंड ओमिशंस थाए, बट दिस इज नॉट अनदर अकाउंट. एरर्स एंड ओमिशंस कोन मु आपण कहि दउची. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो आपण जानि चंदी. एरर्स ओमिशन कोन ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हूँ गोटे स्टेटमेंट आप जानी. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एंट्री करा जाए गोटे कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विद द फॉरेन कंट्रीज, बेले बेले किसी जिनस मिस हो जाए ताकू गोटे सेपरेट सेगमेंट रे एंट्री करा जाए जोटा कि एरर्स ऑफ ओमिशंस एंड कमिशन, एरर्स एंड ओमिशंस बोली कहा जाए सेटा को. ठीक अछि. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आंसर प्लीज. India's forex reserve include foreign currency assets and gold reserves only. Only is quite important here. Only. Right? Second statement कौन कहूँ? Second statement, the foreign currency assets are expressed in dollar terms. Answer करूँ तो. से पचार ची कोटा correct. देखो तो इतने अपना न्यूज रे देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबला में इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर करके देखो, राइट? द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज इंक्रीज टू लेट्स से $470 billion, $570 billion, $670 लेट्स से. तो ये होची बिलियन डॉलर एक्सप्रेस हुए. तेणु सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट होची इट्स नॉट ओनली फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड रिजर्व, आपनकर एसडीआर भी अच्छी एंड रिजर्व पोजीशन भी अच्छी, राइट? तो आंसर होची कोन? 2 only. Next, consider the following statements regarding the currency depreciation in India. Currency depreciation, please answer. Currency depreciation, first statement कौन होची? Currency depreciation increases country's export activity. True or false? It's true or false? Of course, yes. Export activity को बढ़ाए, country's export activity. Travel to India gets costly. Travel to India, India को जी आसुची, तापें costlier या cheaper? Obviously cheaper. The reverse is true. यदि आपण you are traveling abroad, then it's costly, right? Third, people receiving remittances from abroad are gainers. People receiving remittances from abroad are gainers. यदि आपण को करेंसी डेप्रिसिएट करूची तो जो माने बाहर रही की गेन करूचंदी, सपोज आपण इंडिया रो पठाउचंदी बाहर को,
इंडिया रे आपण कोउथिरे अर्न करूचंती इंडियन रुपी रे सपोज $1000 आगुरु केते थिला 60,000 थिला काहे की ना करेंसी एक्सचेंज थिला केते एति की थिला वर्तमान डेप्रिसिएट होउची ता माने $1000 70,000 होउची कोथि पाई ना डेप्रिसिएट हेकी सेटा हे गला केते 70 राइट सपोज जने इंडिया रो तार फैमिली मेंबर्स को प्रति मासरे $1000 से पठाउची आर यू गेटिंग माय पॉइंट तेनु आगुरु ताकू 60,000 पठेबा को पडुथला एबे ताकू 70,000 पठेबा को पडुची तेनु पीपल रिसीविंग रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आर गेनर्स या लूजर्स रिवर्स इज करेक्ट जने जदि बाहरु इंडिया को पठाउची से ताकू $1000 आगुरु जते बळे पठाउथला एज पर द एक्सचेंज रेट 60 से इंडिया रे जो माने पाउथले 60,000 बट वर्तमान जते बळे से 1000 सेम पठाउची ड्यू टू एक्सचेंज रेट 70 डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी से माने पाउचंदी 70 जो मानकर आपण देखिबे पिला माने बाहर पढुचंती यूरोप रे हो आपनकर लेट्स से यूएस रे हो जो माने पढुचंती सेमानक पाखक जो मंथली आपण पठौचंती पैसा तो ऑब्वियसली फॉर द सेम बास्केट ऑफ गुड्स सेम डॉलर आपण को एबे अधिका प्राइस पठेबा को पड़िबो अधिका इंडियन रुपी पठेबा को पड़िबो राइट सेकंड इज इनकरेक्ट थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट आंसर होची कोन regarding currency depreciation in India correct currency depreciation increases export correct travel to India gets costly नहीं travel to India होची आपनकर cheaper हबो काहे की ना जतबेले आपण गोटे डॉलर धरि के आस्तले 60 टका थिला वर्तमान 70 हला तो obviously सेटा cheaper हबो travel to India people receiving remittances from abroad okay फ्रॉम अब्रॉड करेक्ट फ्रॉम अब्रॉड जदि आपण देखिबे डेफिनेटली एटा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हबो फ्रॉम अब्रॉड माने जो माने पठौचंदी सॉरी मु ताको भूल बुझिले एटा को आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो माने पठौचंदी अवश्य मु इंटरप्रिटेशन ठीक करूथली तो पठौचंदी जो माने सपोज $1000 पठौतले 60,000 तांको फैमिली को मिलुथला इंडिया रे एबे सेम $1000 पठेले तांको फैमिली को 70,000 मिलिबो इंडिया रे राइट यस statement 3 is also correct answer होची C 1 and 3 correct absolutely fine ठीक अछि बुझियला जिनसटा जदि यार रिवर्स सही था कि people receiving remittances from abroad या people ये ही गला people send remittances to abroad तो सेटा wrong ही था राइट नेक्स्ट देखिबा आंसर करंतु The exchange rate is what? The exchange rate, the currency exchange rate particularly. The currency exchange rate. The price of one currency relative to another. The price of one currency relative to another. ये होची आपनकर कोन? Currency exchange rate. Next. Tariff is what? Answer करिवे tariff. ये tariff is what? A restriction on the number of export farms, limit on the amount of imported goods, tax on import. Please answer. ओके रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट फार्म्स रेस्ट्रिक्शन किछि भी पारे राइट एक्सपोर्ट फॉर्म्स ऊपर जो एक्सपोर्ट फॉर्म जो एक्सपोर्ट करछन तांको ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लागुची तेनो ऑब्वियसली सी टैरिफ रो अंतर्भुक्त नुहे टैरिफ एक्जेक्टली होची कोन टैरिफ को आपण देखिबे दुई प्रकार रो अछि गोटे होची टैरिफ इन टर्म्स ऑफ प्राइस आ गोटे टैरिफ इन टर्म्स ऑफ कोटा राइट तो कोटा होची कोन ना लिमिट ऑन द अमाउंट जोटा कि हमें क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन बोली कहू मन रखते बेटा
क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जोटा का मैं कोटा बोली को कोटा यानी कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन टैक्स एंड इंपोर्ट ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द प्राइस तेणु जोटा कि कॉस्टलियर हो जिवो तो ऑब्वियसली आंसर होची बी एंड सी करेक्ट डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट ए टैरिफ increases the volume of trade, reduces the volume of trade, has no effect on the volume of trade. A and C of the above. Answer. आंसर करन दो ठीक अच्छे reduces the volume of trade. C is the correct answer. A कहीं क्या होगा increases the volume of trade. C correct Pitambar correct. C is the correct answer. Next इटा को आंसर करिवे dumping. Please answer. डंपिंग रेफर्स टू व्हाट डंपिंग देखंतु कोन डंपिंग होची देखंतु सपोज गोटे प्रोडक्ट अछि चाइना प्रोडक्ट चाइना रे प्रोड्यूस होची चाइना रे प्राइस थिला तार 10 रुपीस चाइना भितरे जतबेले ताकू सेल करा जाउची चाइना प्रोडक्ट तार प्राइस होची 10 रुपीस सेटा को इंडिया आनी की इंडिया रे सेल करा होची 8 रुपीस राइट ता माने कोन फॉरेन कंट्री रे या इंटरनेशनल मार्केट रे फॉरेन मार्केट रे जतबेले आपण ताकू सेल करूचंदी you are selling that product lesser than the domestic price lesser than the domestic price previous question repeat करिवि ये होची previous question tariff देखो तो tariff import हो किंबा export हो दुईटी जगह केस रे impose हेई परियो for example देखो तो वर्तमान जेमती टमाटो जो हमरो अछि टमाटर जो हमें कहूचे टमाटर रो प्राइस होची लेट्स से 100 रुपीस राइट 100 रुपीस आपन को मार्केट रे आपन चाहू नांती कि टमाटर एक्सपोर्ट हो या टोमेटो शुड बी एक्सपोर्ट आपन चाहू नांती यू हैव टू लाइक पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट ता माने एक्सपोर्ट जदी होबनी दैट विल बी अवेलेबल इन आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी प्राइस कैन बी रेगुलेटेड ये होची आपन को ऑब्जेक्टिव तो आपन कोन को एग्जैक्टली कले यारो टैरिफ को 10% इंक्रीज करे देले ता माने 110 ओबियसली जितेबाला एक्सपोर्ट होउथला 100 रुपीस रे कि यदि परचेस करूथला बर्तमान आपण एक्सपोर्ट रे रेस्ट्रिक्शन लगे दिला माने 110 हे गेला इंटरनेशनल मार्केट रे तारो डिमांड कोन हबो सडनली विल कम डाउन या तारो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव देखिबे को कंट्री 110 रु कम रे बिकुची ताटू से माने किनिबे एक्सपोर्ट ऊपर आपण टैरिफ लगेले सपोज गोटे प्रोडक्ट 100 रुपीस रे आपण को कंट्री भीतर को आसुची आपण चाहुचन ताको रेस्ट्रिक्ट करबा पय सो यू कैन इंपोज 10% लाइक टैरिफ so it will be 110 obviously the tariff will come down the demand will come down tanu this reduces the volume of trade tariff reduces the volume of trade next dumping refers to what dumping मैं आपन को एग्जांपल दउतली जनरली कोन होची ना डोमेस्टिक इकोनॉमी रु इंटरनेशनल मार्केट रे आपण सस्ता रे बिकुचंदी तार सिंपली होची कोन हाँ आंसर बी ये क्वेश्चन आंसर बी देवी आराधना आंसर होची बी करेक्ट नेक्स्ट तो डंपिंग माने कोन ना सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लो ए प्राइस बिलो देयर cost and price in the home market
यार मेन पर्पस कौन पर्पस हूँ टू कैप्चर द मार्केट आपण से देखिए चाइना प्रोडक्ट गुड़ा इंडिया रे काफी फ्लड होता चाइना मोबाइल चाइना टॉयज तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी तार डोमेस्टिक इकोनॉमी रे जी बिक्री होता ताठू सस्तार से बिकुला राइट तो ये थला मेन पर्पस तो डंपिंग मन रखते डी हूँ आंसर सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लो ए प्राइस बिलो द कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन बुझीगला डंपिंग कॉन्सेप्ट बुझीगला yes or no please answer next which of the following trade policy limits specified quantity of goods to be imported at one tariff rate next question which of the following trade policy limits specified quantity of goods to be imported at one tariff rate answer करिवे आंसर करिवे D all of the above okay any other answer any other से कौन क्वेश्चन रो एसेंस को पढ़ंतु क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एट वन टैरिफ से क्वांटिटी ऑफ गुड्स कथा कहूची yes imported at what at one tariff rate answer करिवे आंसर होची कोटा आपण क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्वांटिटी ऑफ गुड्स को डिसाइड करूछन देखंतु टैरिफ मु आपण कहितली आपण प्राइस को चेंज करि परंते प्राइस को चेंज करि परंते 10% आपण लगेले 100 रुपीस थिला 110 हे गेला कोटा रे आपण कोन करिवे कोटा रे प्राइस को चेंज न करिकि प्राइस सेम थिबो आपण क्वांटिटी रे रेस्ट्रिक्शन करिवे सपोज 10 क्विंटल 100 क्विंटल या 1000 क्विंटल रो अधिक एक्सपोर्ट ही परिवो नाही या इंपोर्ट ही परिवो नाही सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लाइक आइडेंटिफाई द डिफरेंस कोटा होची क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन आंसर नेक्स्ट which of the following is are the consequences of depreciation of rupee please answer consequences of depreciation of rupee यार आंसर आपण करिवे इजी क्वेश्चन कौन हम आंसर करंतु इजी क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेप्रिसिएशन करेंसी डेप्रिसिएट होउची रुपी डेप्रिसिएट होउची इंक्रीज इन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन difficulty in maintaining low interest rate products and services of India will become costlier to buy select the correct answer using the code below a answer आसुची a तमने 1 and 2 कहउचंदी देखिबा एनालाइज करिबा इंक्रीज इन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन माने कोन आपण इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करूछन त माने इन्फ्लेशन जदी इंटरनेशनल मार्केट रे अछि सेटा आपण को कंट्री रे भी देखिबा को मिलिबो एटा कोन पई होबो ना जेहेतु रुपी डेप्रिसिएट करूची आपण सेम बास्केट ऑफ गुड्स को यू आर पेइंग ए हायर प्राइस सिंपल यू आर पेइंग ए हायर प्राइस दैट इज द रीजन इंक्रीज इन द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स करेक्ट सेकंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग लो इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करबा डिफिकल्ट हबो कोन पई ना जितले आपनकर करेंसी डेप्रिसिएट करूची जितले आपनकर करेंसी डेप्रिसिएट करूची आपनकर इंपोर्ट इंक्रीज होची दैट मींस यू आर इंपोर्टिंग यू आर डिमांडिंग मोर ऑफ फॉरेन करेंसी जितले फॉरेन करेंसी रे डिमांड बढ़िबो डेफिनेटली आपनकर करेंसी पूरी थरे डेप्रिसिएट फर्दर डेप्रिसिएट हैला माने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो आपनकर अछि से विथड्रॉ हवा स्टार्ट हबो इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ हवा स्टार्ट हो माने फर्दर डेप्रिसिएट करिवो त माने जो
मेंटेनिंग लो इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट आपनकर थिला या इंटरेस्ट रेट को आपण लो रखिथिले तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर माने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करवा स्टार्ट करनेबे, फर्दर आहुरी आपन करेंसी को डेप्रिसिएट हवा को पड़िबो या डेप्रिसिएट हबो। थर्ड कहूची प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया विल बिकम कॉस्टलियर टू बाय। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया या माने इंडिया रु जे परचेस करिवो ता पई कॉस्टलियर हबो ना ता पई चीपर हबो। बारंबार आमे डिस्कस करि सारिचे एटा, ता पई चीपर हबो। कॉस्टलियर हबो कहारो आमो पई, हमरो इंपोर्ट बिल आहुरी अधिका बढ़िबो, आमो पई कॉस्टलियर हबो, फॉरेन वालांग पई चीपर हबो, सेत पई त हमरो एक्सपोर्ट भी बढ़िबो। तणु थर्ड स्टेटमेंट को आपण इजिली एलिमिनेट करि परिबे। जदि थर्ड को आपण इजिली एलिमिनेट करूछंती तो आंसर होउची कोन ए। बट सेकंड रो लॉजिक आपण बुझिले, लो इंटरेस्ट रेट काहे की हबो ना, लो इंटरेस्ट एथि पई मेंटेन करिबा डिफिकल्ट हबो कारण इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हवा स्टार्ट हबो। कारण विड्रॉ कोन पई हबो ना, जोटी से माने देखिबे हायर इंटरेस्ट से माने मूव करिबा स्टार्ट करिवे, लोअर इंटरेस्ट रे इन्वेस्ट करिवे नाही, प्लस आपण को करेंसी धीरे धीरे वीक ही जाउची, अगेन द साइन ऑफ लाइक बैड सिचुएशन। नेक्स्ट, consider the following statements. The exchange rate of INR is market determined. The exchange rate of INR is market determined. तमाने इंडिया रे इंडियन रुपी, इंडियन नेशनल रुपी जो अच्छी से एक्सचेंज रेट लेट से $1 इंडियन रुपी लेट से मार्केट द्वारा डिटरमिन होउची। फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची। सेकंड, आरबीआई इंटरवेन्स ओनली टू कर्व अनड्यू वोलेटिलिटी। से कहूची आरबीआई सबले इंटरविन करेनी, आरबीआई केवल इंटरविन करे ओनली टू कर्व अनड्यू वोलेटिलिटी। तले वोलाटाइल होउची, फ्लक्चुएट अधिका करूची, सेही समय रे ही से कोन करूची इंटरविन करूची। थर्ड, द आईएनआर डेप्रिसिएटेड अगेंस्ट ऑल मेजर ग्लोबल करेंसीज इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। से कहूची 23-24 रे इंडियन रुपी डेप्रिसिएटेड अगेंस्ट ऑल मेजर ग्लोबल करेंसीज। यार आंसर कौन हम कहतु? देखो एक तो ये ऑल मेजर करेंसी जो अच्छी, ये ऑल को आप इजिली एलिमिनेट करि परिबे। एटा को एलिमिनेट कर दिंतो, आपण एलिमिनेट कले आंसर होची ए। आंसर होची ए। ये दुईटार जस्टिफिकेशन मुझे आपन को दउची। देखो ऑल मेजर करेंसी नथिला, डॉलर अगेंस्ट सबुठु अधिका डेप्रिसिएट हमको देखिबा को मिलथिला, बट इफ यू सी इन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फॉरेन करेंसीज इंडिया हैज नॉट दैट मच, लाइक इंडिया हैज नॉट परफॉर्म बैडली देखिबा को गले विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। आपण जानिथि एक्सचेंज रेट जो डिटरमिन करा जाय तीन प्रकार अच्छी, गोटे हूँ मार्केट डिटरमिन, आ गोटे हूँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जोटा एटा को फ्लेक्सिबल कहा जाए, मार्केट डिटरमिन सेटा को फ्लेक्सिबल कहा जाए, एटा को कहा जाए फिक्स्ड। तृतीयटी हूँ कौन मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग हूँ मिक्स ऑफ दिस टू। फ्लेक्सिबल हूँ कौन ना दिस वन, द फर्स्ट वन, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल हूँ फर्स्ट वन मार्केट डिटरमिन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी से मैंने यूज करती तो एक्सचेंज रेट प्योरली मार्केट द्वारा डिटरमिन हुए। सेकंड हूँ फिक्स्ड हूँ जोटा कि सोशलिस्ट लेट से चाइना रशिया मैंने डिटरमिन करती एक्सचेंज रेट को। इंडिया एटा करे मैनेज फ्लोटिंग, दरकार पड़ले इंटरविन करे, मार्केट द्वारा डिटरमिन हुए, बट जो अधिका वोलाटाइल हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, तार फ्लक्चुएशन को रेस्ट्रिक्ट करने आरबीआई इंटरवीन्स। एटा को मन रखते हुए ठीक अच्छे। आंसर हूँ 1 and 2 ए ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन व्हिच द गवर्नमेंट कैन टेक। आई थिंक क्वेश्चन आम डिस्कस कर सारी, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो ठीक अच्छे। मन थी आपंकर डी वैल्यू करवा एटा नुहे 1 and 3 क्वेश्चन रिपीट एटा। नेक्स्ट यार आंसर करंतु कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज
Convertibility of rupee implies, please answer. Convertibility of rupee implies what? मन रखता convertibility of rupee माने ये convertibility of any currency माने freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa. Freely permitting the conversion of rupee into other currencies and vice versa ये होची convertibility काहेकि ना आपण देखिबे इंडिया रे कैपिटल अकाउंट अछि करंट अकाउंट अछि डिस्कस हम करूथले करंट अकाउंट ई करंट अकाउंट रे दैट मींस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम डिस्कस करूथले सेठी आपनकर fully convertible माने कोन complete convertible, no restriction in the converting one currency into another or converting Indian rupee into other currency, foreign currency, full convertible. Capital होची कोन capital होची simply आपनकर partial convertibility, not fully. That means restrictions should be there, restriction imposed by the government. Restriction should be there, restriction imposed by the government. Government, I mean RBI you can say, central bank. So C होची correct answer. Next. Recently, which one of the following currencies has been proposed to be added to the basket of IMF's SDR? Please answer. Easy question. Please answer. Answer कौन होगा? D. Yes, of course. Renminbi. D is the correct answer. D, not Indian rupee. D. Renminbi जोटा 2016 रे आड़ ही SDR रे मन रखते बेटा. Next. Consider the following statement. The price of any currency in international market या international decided by प्राइस ऑफ एनी करेन्सी यानी कि जो एक्सचेंज रेट आमे जो कहूचे सेटा कहा द्वारा डिसाइड हुए सपोज आपण गोटे डॉलर दे केते इंडियन रुपी पाइबे या गोटे इंडियन रुपी दे कि केते डॉलर पाइबे सेटा के डिसाइड करे वर्ल्ड बैंक डिसाइड करे ऑफ कोर्स नो जदि वर्ल्ड बैंक नु है तबे आपण एलिमिनेट करंतु 2 1 3 3 and 4 रहला त माने 3 करेक्ट कारण तीनोटी जाको दुईटी जाको रे 3 अछि त माने स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री ऑफ कोर्स demand for goods and services provided by the country concerned, economic potential of the country in question. Obviously, economic potential सहित कौनसी answer माने link नहीं. Demand for goods and services is also a matter of concern. कारण जितने demand रहिबो गोटे product रो या जहार वो country अधिका demand रहिबो तार currency सेते stronger रहिबो because the country will demand more of that. Let's say Indian products रो काफी demand अछि तो इंडिया को सेमाने को भली भाबरे पे करिबा पई चेष्टा करिबे इंडियन रुपी रे तो इंडियन रुपी रो डिमांड अधिका रहिबो तो इंडियन रुपी स्ट्रांग रहिबो अप्रिशिएट करिवो सो आंसर होउची आपनकर 2 and 3 यस बी इज द करेक्ट आंसर यार आंसर करंतु How many of the above factors will reduce the current account deficit? Current account deficit को ठीक करिवारे कोटा help करिवो. Increase in merchandise trade deficit, is it so? Of course not. कारण merchandise trade deficit माने कौन? Goods खाली कहूची. Goods माने merchandise कथा कहूची. Goods रे trade deficit हेले of course again it will further widen the current account deficit. Of course not. पण easily ताको eliminate करि परिबे. Now 3 and 2 3 दुईटा जरा अछि माने 3 करेक्ट थिबो इंक्रीजिंग रेमिटांसेस ता माने जो रेमिटांसेस आपन कंट्री को आसुची फॉरेन करेंसी रे ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस दिस करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीजिंग नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट इन एनी फॉर्म वो चाहे सर्विस हो या गुड्स हो दैट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट सो ऑफ कोर्स आंसर इज डी 2 and 3 export of goods and services सबोले पे आपन को हेल्प करिवो टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन
पुणी थर देखा हवा गोटे नुआ वीडियो रे नुआ टॉपिक्स को लेकिन ये टॉपिक टी बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आसवर हाईली चांसेस तेणु चेष्टा करूँ जो जो जी डिस्कस आम कले कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट ये टॉपिक रे सब कॉन्सेप्ट आम डिस्कस करें तेणु चेष्टा करूँ रिवाइज करने जहाँ भी क्वेश्चन आप इजिली करेंगे एंड ऑफकोर्स लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे कमेंट तो आप करूना नो इश्यू आपण फिलिंग्स आपण इमोशंस आपण पाखे रखु आम किसी कहबार नहीं बट कमेंट करवा इज क्वाइट कमेंट इन द सेंस कि इट्स नॉट दैट आप खाली प्रेज करंतु मु कहूची बट कमेंट ऑफ एनीथिंग कौन सी टॉपिक को नहीं कमेंट करेंगे कि से नेक्स्ट टॉपिक ये आम कवर करवा कि आपण कही परिवे सर ये जगह आपण भूल कहले ठीक कहले ये जगह आउ टिके बेटर क्लैरिटी आपण कहि परन सो दैट आई कैन ऐड दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो कारण आपण को कमेंट पाई ही आमे ताकू पुनी आगु को ये करि परिबा नेशनल इनकम सेशन तो आम डिस्कस कर सारी ऑलरेडी नेशनल इनकम सेशन आम ऑलरेडी डिस्कस करें यू कैन चेक दैट येस एडमिट कार्ड ऑलरेडी आसी जाइए देखी पारती आप रिलीज हो जाइए इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट भी देखी ने एनीवे सो जो मैंने फाउंडेशन कोर्स जॉइन करने चाहते से माने फाउंडेशन कोर्स भी जॉइन करेंगे कोड यूज करेंगे Y962 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉलिटी तो सर करूचंती एसके राउत सर पॉलिटी सर करूचंती मु जदि हम हिस्ट्री आनी पारे हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री करि पारे मु ठीक अछि थैंक यू सी यू सून थैंक यू